का मजबूर हो गए। आज जो सुधार हम देख रहे हैं, कांग्रेस इस दिशा में एक कदम भी उठा नहीं पाई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मणिपुर में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। हमारी सरकार ने वह किया है जो कांग्रेस की सरकार करना तो दूर सोच भी नहीं सकती थी। 2008 से 2023 तक 7,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 82% आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, 50,000 करोड़ से रुपये से भी ज्यादा निवेश वहां हुआ है। ड्रग माफिया पे बड़ी कार्रवाई हुई है और सीमा प्रबंध को भी कड़ा किया गया है। पहली बार AFSPA हटाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई है। मणिपुर आज शांति की राह पर इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है। ट्रैक और ट्रेस ऑनलाइन व्यवस्था और अवैध व्यापार पर कतरा प्रहार करना ये माननीय मोदी जी की सरकार में संभव हुआ है। कांग्रेस के समय अवैध व्यापार, तस्करी, नकली बिलिंग और भ्रष्टाचार खुलेआम चलते थे। इस विधेयक के तहत डिजिटल ट्रैक और ट्रेस की प्रणाली लागू होगी। तस्करी और अवैध कारोबारी अब बच नहीं पाएंगे। नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10% अतिरिक्त कर भी लगा जाएगा। ये मणिपुर के काले धन और माफियाओं से मुक्त करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम केंद्र सरकार उठा रही है। उद्योग और व्यापार के लिए बड़ा सुधार और ITC में भी क्रांति। प्लीज कंक्लूड। 17(5) में संशोधन करके ये सरकार ला रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये 4 मूल मंत्र पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश को मजबूत करने के लिए जिस तरह से 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और मणिपुर को भी आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए ये जो बदलाव ला रहे उसका मैं समर्थन करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल्पना सैनी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आज इस महत्वपूर्ण विधेयक मणिपुर माल और सेवा कर विधेयक 2025 पर विचार और पारित करने के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तथा वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। मैं यह विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि पारदर्शिता, सरलता और विश्वसनीयता, इन तीनों मूल्यों के बिना कोई भी कर व्यवस्था मजबूत नहीं बन सकती। यह विधेयक इन सभी बिंदुओं पर खरा उतरता है। माननीय सभापति महोदय, मणिपुर ने पिछले कई वर्षों में सामाजिक आर्थिक चुनौतियां देखी हैं। ऐसे समय में एक स्थिर, सरल और भरोसेमंद कर व्यवस्था वहां के व्यापारियों, महिलाओं, उद्यमियों, स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसको ध्यान में रखकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह व्यवस्था दी है। माननीय सभापति महोदय, GST एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है कर प्रणाली का सरलीकरण, कर चोरी पर नियंत्रण, व्यापार में सुविधा तथा राजस्व संग्रह में मजबूती। ऐसे में यह संशोधन स्थानीय उद्यमियों, छोटे व्यापारियों और उद्योग जगत को राहत प्रदान करेगा। साथ ही डिजिटल अनुपालन और कर भुगतान प्रक्रिया और अधिक सरल होगी। इस विधेयक के माध्यम से अनेकों सुधार होंगे। मणिपुर में GST की प्रक्रिया और अधिक सरल होगी, जिससे छोटे व्यापारी, खासकर वे महिलाएं जो घर में व्यवसाय करती हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। इससे व्यापार में नकदी प्रवाह सुधरेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। डिजिटल अनुपालन को आसान बनाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों तक भी सुरक्षित और सरल ऑनलाइन व्यवस्था पहुंच सके। इस संशोधन से मणिपुर को आर्थिक स्थिरता मिलेगी, जो वहां विकास, निवेश और रोजगार सृजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज जब देश महिला शक्ति, नारी उद्यमिता और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब यह आवश्यक है कि कर व्यवस्था भी जेंडर रेस्पॉन्सिव और व्यापार अनुकूल बने। यह विधेयक उसी सोच को आगे ले जाता है। अध्यक्ष महोदय,
मैं यह पूरी स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि मणिपुर में शांति, विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब वहां की कर व्यवस्था स्थिर और विश्वसनीय हो। Please conclude. यह संशोधन व्यापार जगत को नई ऊर्जा देगा, विशेषकर उन महिलाओं को जो अपने परिवार और समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगी, कर प्रणाली तभी सफल होती है जब वह व्यापारियों की सुविधा, राजस्व वृद्धि और सुशासन तंत्र के बीच संतुलन बनाए रखे। यह विधेयक उस उद्देश्य को मजबूती प्रदान करता है। राज्य में शांति, स्थिरता और आर्थिक पुनरुत्थान के लिए बेहतर वित्तीय ढांचा अत्यंत आवश्यक है और यह संशोधन उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण भाग है। अंत में मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रयासों की सराहना करते हुए सदन से आग्रह करती हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए तथा मणिपुर के आर्थिक पुनर्निर्माण और सामाजिक स्थिरता और विकास यात्रा को नई दिशा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती सुलता देव जी। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। पहले तो मैं आपको अभिनंदन करती हूँ, आपका और मेरा ये पहला डिस्कशन है। आज मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। पहले तो मैं ये चाहूँगी कि मणिपुर में शांति वापस आए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाया जाए, मणिपुर में इलेक्शन हो और मणिपुर में डेमोक्रेटिक वैसे इलेक्शन हो, वो गवर्नमेंट हो। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो स्टेट का मैटर है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे नेता नवीन पटनायक जी हमेशा चाहते हैं कि मणिपुर जैसे स्टेट में महिला सुरक्षित हो, महिला के ऊपर शांति आए और मणिपुर में शांति वापस आए। अब आएंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी कहीं भी हो, मणिपुर हो, उड़ीसा हो या भारत में कहीं भी हो, भारत में सारे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जीएसटी लिया जा रहा है, 28%, जबकि अर्जेंटीना भी 27%, हम उससे भी ऊपर आ गए हैं। जीएसटी अभी जो महंगाई हो रही है, महंगाई के ऊपर में और भी बड़ी मार है। एक रिक्शा वाला, एक कोई भी हो, छोटे उसको चाय मतलब ये अगर मूढ़ी खरीदे पैकेट वाला, उस पे भी जीएसटी आता है। क्या करेंगे वो जीएसटी इतना देके? और टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, छोटे छोटे सामग्री हो, दूध हो, जो बच्चों पीते हैं दूध हो, उस पे भी जीएसटी है। मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, उसके ऊपर भी जीएसटी है। तो जीएसटी का स्लैब कम करना चाहिए, बहुत ही पूरी तरह से हटा देना भी चाहिए। जो कमोडिटी है, इमरजेंसी जैसे दूध हो, मेडिसिन वगैरह, उसमें पूरा हटा देना चाहिए। जीएसटी के चलते मणिपुर के बारे में हम अगर जब बात कर रहे हैं, मणिपुर एक ऐसा संघर्षमय स्टेट है, उसके ऊपर जीएसटी के बहुत सारे कमोडिटी में जीएसटी हटा देना चाहिए। जीएसटी के चलते वहां पर जो ऑफिसर्स है वहां कैसे सबको हेल्प करे, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेट कनेक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो अगर ठीक से ना हो वहां पर, तो ये जीएसटी के बारे में क्या बोलेंगे? जीएसटी काउंसिल यहाँ पर बैठता है, मगर सारे स्टेट को विश्वास में लेना जरूरी है जीएसटी काउंसिल में, फिर पुनर्विचार करना जरूरी है। और ऊपर से मैं यहाँ पर वित्त मंत्री जी बैठी है, निर्मला सीतारमण जी, मैंने बार बार संसद में, मैंने हमारे बीजू जनता दल से सबको ही बोले हैं, केंदू लिप के ऊपर 18% जीएसटी था, उसको हटाइए, पूरा हटाइए। नवीन पटनायक का डिमांड था, मैं धन्यवाद देती हूँ, 5% हो गया है, मगर पूरा हटा दीजिए जीएसटी केंदू लिप के ऊपर। और ये इसमें महिलाएं बहुत सारे हैं, 10 लाख महिला प्लकर्स है, उनको बेनिफिट मिलेगा। जीएसटी जो हमारे आदिवासी प्रोडक्ट होते हैं ना, उस पे भी जीएसटी लगाते हैं, महू हो, ये जो झुना हो, जो कुछ, उसके ऊपर में से भी जीएसटी हटा देना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम के ऊपर में भी से भी जीएसटी हटा देना चाहिए। और ऊपर से मैं और एक बात बोलूंगी, कंक्लूड कर रहे हैं, और एक बात बोलूंगी उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में हमारा जब सरकार था, करीबन 4000 करोड़ का जीएसटी बकाया था, आज तक वो मिला कि नहीं पता नहीं। हम तो जब छोड़ के आए, अब डबल इंजन हो गया, सोच रहे हैं और जीएसटी हम लोगों को मिल गया होगा। इसके चलते मैं बस इतना ही कहूंगी, जो जीएसटी है वो सारे स्टेट को विश्वास में लेके किया जाए। थैंक यू सो मच। जय श्री जगन्नाथ। श्री अयोध्या रामी रेड्डी अल्लाह। Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on the Manipur Goods and Services Tax
Second Amendment Bill 2025. Sir, the uniform GST compliance and economic growth aligning Manipur's GST with central rules ensures seamless interstate trade, reduces legal and administrative conflicts, and provides clarity and predictability for investors and businesses. This uniformity encourages investment, stimulates local production, and creates employment opportunities, mirroring the economic growth and prosperity observed in other states following harmonized GST framework. These harmonized rules, including modern compliance mechanisms like track and trace, help minimize tax disputes and enhance revenue collection. By reducing compliance burdens and ensuring transparency, Manipur can focus on sustainable development, tapping into national economic progress and benefiting from inclusive growth that strengthens both the state and the country as a whole. Sir, I would like to bring certain issues to your attention, especially focusing on the peace and economic stability in Manipur. Sir, in Manipur, violent incidents declined significantly over past decade, from a peak of 740 incidents in 2008 to 97 in 20 and 112 in 2021. Similarly, insurgent fatalities also fell from 364 in 2008 to 7 in 2020 and 18 in 2021. While civilian deaths dropped from 28 in 2013 to 9 in 2020. However, only in 2023, this declining trend has slowed down, and as of April 25, there were about 260 deaths that were reported. This need to be certainly looked into. Periods of relative peace also clearly support higher economic activity, as seen in the trade, entrepreneurship, and local industries. Conversely, during episodes of ethnic violence, Manipur's exports collapsed by nearly 80%, highlighting how sustained peace is essential for economic prosperity and stability. Sir, sustainable peace also requires addressing disparities between hill and valley regions and between majoritarian and tribal communities also. Also, we need to revisit the ITC, the input tax credit provisions for tourism and hospitality sector in Manipur. In terms of critical GST issues that deserves our attention, one industry that urgently requires support is the tourism and hospitality, especially in that place. Addressing, I also wish to draw the attention to the pricing and compliance distortions created by the current GST structure for textiles. We need to certainly look into it. Given these concerns, it's Please important conclude. that with all these things, comments and suggestions, we from YSR Congress Party support this bill. Thank you, sir. Srimati Nirmala Sitharaman ji to reply to the discussion. So thank you very much, sir. And I wish to recognize and I'm grateful to you that for the first time with you in the chair, I'm being called to respond to a bill. So for that, I extend my gratefulness to you. Sir, today we are discussing on the Manipur Goods and Services Tax Second Amendment Bill, sir. Every time the central government amends the Central Goods and Services Act of 2017, we also need the states to amend their state GST related law. Through the Finance Act 2025, Sections 121 to 134 of the Central Goods and Services Act was amended. And
it got enacted in August 2025. The changes have come into effect from October 2025. And that could happen after more than half of the states updated their GST laws. So every time something happens in the center, the states also will have to pass. And once half of them have passed, it comes into effect. And that's how it came, this set of changes to the sections 121 to 134, which was made through the Finance Act of 2025, have come into effect in October because states have all. But unfortunately, because Manipur was under the president's rule, the corresponding effect-giving measures could not be taken up in the state GST laws. The assembly was in a suspended mode, and Manipur Goods and Services Act of 2017 was not amended, but it was amended through an ordinance that was promulgated by the central government, and that was done on 7th October, sir. So now this bill is coming to replace that ordinance. And so the changes which have been brought will be made permanent for Manipur's sake. Sir, before I go into the few details which I want to table here, I want to say a word about the opposition leaders, opposition parties. So throughout 24, we saw them shedding crocodile tears about Manipur for everything. Did the Prime Minister visit? Did the Home Minister visit? Did the law and order come to normalcy? Every time about Manipur, they will raise issues, they will voice their grievance, total crocodile tears. I've seen it even earlier once when we brought in a bill for Manipur's budget, because again, it was under the president's rule and the governor was doing it. We had to present a budget for Manipur. Even at that time, they did not participate in the debate. Even at that time, they did not think of Manipur people's welfare, that money should go to them through the budget being passed. They didn't think about it. Even today, when the GST benefits have to go to the state government because they will otherwise not earn the revenue out of it, when we are trying to have an ordinance be converted to be a regular bill and get passed here to become an act, they are not here to participate. So all the grievance that they voiced about Manipur, accusing the Prime Minister, accusing the Home Minister, they're all just drama. I'm ashamed to say this. I'm sorry to say this. विपक्ष के रोल ये होता है कि आप जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ एक जो स्टेट जिसके ऊपर आप इतना बात कर रही हो, उसका बेहतरी के लिए कानून जब पारित होता है, बजट जब पारित होता है, उसमें शामिल होना है, भाग लेना है। मगर ये विपक्ष तो मगरमच्छी का आंसू बह रही है और जब क्रिटिकल बिल्स आते हैं मणिपुर का भाग जाते हैं। शर्मनाक बात है सर, आई एम सॉरी। मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूं कि आज भी वो मणिपुर की चर्चा में भाग नहीं लिया, दुख के मैं कहना चाह रही हूं। सर, दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट is very important, sir, because it does two things. The very important reform-based steps that we have taken in GST, like track and trace system. Once you do the track and trace system, which is a very big step in administering the GST, you are able to prevent leakages. And therefore, that was one of the things which was passed in the Finance Act of 25. Now we are making it into a bill for Manipur. Similarly, at the time of supply, sir, particularly for vouchers, the rules which we're dealing with it are being removed so that it becomes simple, and because issuing a voucher is not actually the supply of goods or service. So this change will bring in ease of doing business, avoid unnecessary disputes on when the tax becomes payable. So that becomes a disputable point.
Now that will be removed. There was from the beginning a little ambiguity when we described plant and machinery. We said plant or machinery. The word or led to a lot of confusion. So this time, through the February Finance Act, we have removed the word or and put the word and. Plant and machinery, and as a result, the ambiguity will be removed. But again, I'd like to confirm here, which is for the good of the people of Manipur, we made plant and machinery, removing plant or machinery, removing or. It's not going to be affected only from today. It will be affected from 1st July 2017, when the GST was originally for the first time brought to play. So as a result, people in Manipur, businesses in Manipur, enterprises in Manipur also will benefit from this removal of ambiguity, which the entire nation has benefited from, but Manipur has been denied because there was no government. Now we are giving that benefit to them. Also, sir, when there is a dispute, people are expected to pay 10% pre-deposit. We are only asking for 10% pre-deposit for appeals before the appellate authority or the appellate tribunal, even in cases where only the penalty is being challenged. So this keeps the appeal process consistent so that it doesn't look as if we are taking the 10% for appellate authority and not for the tribunal. Those confusions will not prevail. We are bringing consistency in the process and discourage frivolous litigation, because people will just go rush in for some kind of a time buying or whatever. That frivolous litigations will be now discouraged. And lastly, sir, when goods are kept in a special economic zone or a free trade warehousing zone and are sold before being taken out of the zone itself, such transactions will now be treated as neither a supply of good or a supply of services, providing, again, the much needed clarity and avoiding unintended consequences. So even before, if it is removed from the SEZ or the special economic warehousing zone, if the sale happens, we'll treat it as non-sale, in the sense we'll treat it as neither a supply of goods or a supply of services, so there won't be any confusion. So these above amendments have been carried out in the Central GST Act, but again, as I said earlier, sir, it hadn't happened during the Manipur state GST because of ordinance which had to be brought in. Now we're converting that ordinance into a law. So there are one or two points of clarification which some members spoke about, which I'll very quickly finish. In fact, there were 13 of them who spoke, and some of them did raise some issues. So, Madam Sulata Dev mentioned that in the recent maximum GST rate is 28%. 28% actually has been abolished, sir. We don't have 28% anymore. So it has not been, it's not there anymore. It has been abolished. And items which were in 28% either moved to 18, or if they were sin goods, they moved to 40. So there is no more 28%. And when we say sin goods, we say demerit goods, such as tobacco products, have all gone to 40. So that is one thing, sir. Essentials, Madam Sulata, they've mentioned essentials like milk, food, toothpaste, handicrafts are subject to GST. The rates of essentials have been reduced from 12 to 5%, sir. In fact, handicrafts have come to 5%. In fact, milk has no GST at all. It's never had. And even now, except for that UHT, which has a specialized package, high temperature heating, and then it can be preserved without refrigeration. It used to come in a specialized pack that till you open it, it can remain without refrigeration. After that, if you open it, you'll have to keep it in the fridge. That used to have a rate of tax. Other than that, milk never had a tax. Even this has now come to zero. The UHT is also come down to zero. So I just want that clarification given.
As always, members from Orissa, I can't see Sasmit Patra here, always refer to Kendu leaves or the Tendu leaves, in which BD or tobacco is put in and it is rolled. That leaf is called Tendu leaves. It's collected as a minor forest produce. Sir, I want to reassure the member. It's now come down to 5 and she's recognized that in her speech. But on Kendu leaf, sir, at least 4 GST councils have met and spoken on it. Elaborate discussions have happened. And if one state, Orissa, wants it, Telangana wouldn't want it. We've crossed all those stages and now we've brought it down to 5. Bring it down to 0. That's been, I'm sorry to say, sir, many requests come like that. By keeping an item in 0, where even some input credit can be accruing to you, will not accrue to you if you keep it at 0. So there is a benefit in keeping it at the lowest possible rate, which is 5%. If I move to 0, even the little refund that you get, you will not get. So there is a reason, madam, that we've kept it at 5. I want to inform the honorable member through you, sir. Then Sri Ayodhya Ramireddy ji spoke about inverted duty structure, sir. I'm happy to say as much work happened on rate rationalization, bringing rates down, making 4 rates into 2 only, not having 4. Equal amount of work went into correcting inverted duty structure. And I'm happy to say most of the items where inversion happened because the final product was sold at, let us say, 5%. The inputs were being bought at 12%, which is no more there, but 12%. The difference could not be retrieved, and as a result, there was an inversion. But for retrieving the difference, you had to give them refunds. That inversion problem has been largely addressed in the new generation GST, which has come into force. So I would like to inform Sri Ayodhya Ramireddy that inversion has been addressed. 99%, there can be still 1 or 2 which we'll address as and when it comes about. Sir. As particular mention was made by the honorable member on hospitality. We have actually reduced the rate of tax on hotel rooms below 7,500 rupees per night to 5%. Earlier it was 12%. Rooms which are at the rate of 7,500 or lesser were earlier taxed at 12%. Now they have all come down to 5%, sir. This will, I'm sure, make travel easier. Tourism will have an attractive point there, and they will have reason to encourage tourists to take care of the rooms which are at that cost. So with these words, sir, I request the House to consider to pass this bill because it will help the state of Manipur. Thank you very much. The question is that the Manipur Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 to 16 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 2 to 16 are adopted. Class 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Class 1, the enacting formula and the bill are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move.
Sir, I rise to move that the bill be returned. That the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Special mentions. Dr. Ajit Madhav Rao, Kopsade. Not present. Not present. A.D. Singh. Not present. Shri Maya Narolia. सभापति महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने मुझे इस विशेष उल्लेख के लिए बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। नर्मदापुरम से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री राजधानी नई दिल्ली की ओर यात्रा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, लेकिन इस मार्ग पर कोई भी सीधी सुपरफास्ट और आधुनिक श्रेणी की ट्रेन उपलब्ध नहीं है। इसलिए यहाँ के यात्रियों को भोपाल या इटारसी होकर यात्रा करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता लंबे समय से वंदे भारत अथवा राजधानी जैसी तेज एवं सुरक्षित ट्रेन सेवा की मांग कर रही है। यह सुविधा छात्रों, नौकरी पेशा व्यक्तियों, व्यापारियों और यात्रियों सभी के लिए अधिक आवश्यक है। मैं सरकार से इस समस्या के निराकरण के लिए आग्रह करती हूं कि नर्मदापुरम से दिल्ली के बीच सीधी वंदे भारत या राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने का अध्ययन किया जाए। एक और विकल्प है इसके लिए कि भोपाल से हमारी जो वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसको नर्मदापुरम और इटारसी बढ़ाया जाए, तो इससे यात्रियों को भी बहुत सुगमता प्राप्त होगी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा करती हूं। धन्यवाद। Dr. Kanimoli NVN Somo. Sri Maharaja Sanojaba Laisemba. Thank you, sir. Sir, the subject of my special mention is demand for inclusion of Sanami as a separate religion in the census of India. Sir, the Manipur Legislative Assembly, through an unanimous resolution adopted on 5 August 2022, had urged the Registrar General and the Census Commissioner of India to include Sanami as a separate religious category. The resolution reflects not only the collective voice of states' elected representatives, but also the long-standing sentiments of the Meitei community, for whom Sanami is an indigenous and ancient faith with unique religious practice, rituals, and the cultural heritage. Despite repeated appeals from scholars, civil society organizations, community leaders, and religious boards or authority like Langtong Sanamahi Temple Board and Uttarakhand and Sanakonung, etc., the absence of an independent enumeration code for Sanamahi has led to misrepresentation and a dilution of the religious identity of its follower. Thousands of individuals continue to identify with Sanamahi in practice, yet have no appropriate category to record their faith in the census schedule. Recognizing Sanamahi as a distinct religion would ensure accurate demographic representation, safeguard cultural heritage, and uphold the constitutional principles of religious freedom and identity. So I urge upon the government to include Sanami as a separate religion in the census of India and issue a clear directives
to the census authorities accordingly. Thank you, sir. Sri Ramji Lal Suman, Dr. Fawzia Khan, Sri Mahendra Bhatt, महोदय, सब्जेक्ट है चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने के संदर्भ में। सभापति महोदय, गौरा देवी जी उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली की जोशफट विकास खंड के रैणी गांव की भोटिया जनजाति की ग्रामीण महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृ शक्ति के द्वारा वृक्षों के आलिंगन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। आज आंदोलन के 51 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पर्यावरण बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को इस सीमांत क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, जब पेड़ों को काटने वाले ठेकेदारों द्वारा पेड़ काटने के लिए मजदूरों को भेजा। तब गौरा देवी जी के नेतृत्व में महिलाएं इन पेड़ों पर चिपक गई। उन्होंने कहा, पेड़ों को काटने से पहले उन्हें काटा जाए। इस आंदोलन की गूंज को भारत सहित संपूर्ण दुनिया ने सुना। चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण बड़ा मुद्दा बना दिया और यह आंदोलन भारत के हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार राज्यों तक फैल गया। इस आंदोलन का ही परिणाम रहा कि तत्कालीन भारत सरकार ने 15 वर्षों तक हिमालयी राज्यों में पेड़ कटान को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया। चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के संघर्षों की कहानी है। जंगल प्रकृति के लिए कितने मूल्यवान है, उस समय के आंदोलन गीत में निहित है। चिपका डालियों पर न कटन देवा, पहाड़ों की संपत्ति अब न लूटन देवा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस महान विभूति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। Dr. Ashok Kumar Mittal, Sri Lagar Singh Siroya. बहुत बहुत स्वागत आपका चेयरमैन साहब। कर्नाटक की 6 करोड़ जनता की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत। सर, अर्जेंट नीड फॉर बैलेंसिंग हेरिटेज preservation and tourism promotion, sir. Sir, I bring to House's attention to the critical state of our national heritage exemplified by Hampi, the magnificent open-air museum, and a profound testament to the Vijayanagar Empire's glory, sir. Following the Honorable PM's recent call to citizens to visit 25 heritage sites, we must urgently balance tourism promotion with effective long-term heritage conservation, sir. Recently, media reports highlight serious concerns at Hampi, unchecked vegetation on monuments, stalled restoration work, and an expert vulnerability assessment raised doubts about the adequacy of current management by concerned agencies. Sir, my recent interaction with experts following the launch of publication of Hampi, which I had the privilege to support, underscored the deep concerns for preservation. Our irreplaceable cultural treasures demand a sustained national commitment. Excessive, often unruly tourism directly causes heritage degradation, sir. We must consider international best practice, including regulating or limiting tourist numbers of critical sites during the peak period, sir. I therefore urge the Union government to mandate the Archaeological Survey of India to urgently devise a comprehensive national level formula to actively and sustainably balance heritage preservation and tourism management across all our heritage sites. The government must also launch a sustained national campaign to educate citizens on the profound value of our heritage and the vital importance of our preservation. Hampi is a jewel of Indian history. Its protection and that of all such sites is a paramount national and global responsibility. Let us act now to ensure the magnificence of our heritage endures. Thank you very much, sir. Dhanyawad. Srimati Rajini Ashok Rao Patil, Dr. Dinesh Sharma. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आपने साइबर अपराध और इसका गरीब नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का विशेष उल्लेख करने का मुझे अवसर दिया है। मान्यवर, तकनीकी प्रगति के साथ साथ
साइबर अपराधों का प्रसार हमारे लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन सेवाओं ने जीवन को सरल बनाया है, वहीं साइबर अपराधियों के लिए लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चुराना और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना उनके लिए आसान हो गया है। फिशिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन ठगी और हैकिंग जैसे अपराध आम हो गए हैं। इसके कारण नागरिक, विशेषकर गरीब और तकनीकी रूप से कम जागरूक लोग बड़े नुकसान का शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत की कमाई डिजिटल माध्यमों में सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपर्याप्त जानकारी के कारण साइबर अपराधों का वे शिकार हो जाते हैं। साइबर सुरक्षा के अभाव में गरीब वर्ग के लोग जो इंटरनेट की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह परिचित नहीं हैं, अपराधियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। उनके लिए किसी भी तरह की आर्थिक क्षति एक गंभीर आघात है, जिससे उबरना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में भी गरीब नागरिकों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए मानसिक और आर्थिक संकट का कारण बनते हैं। साइबर अपराधों की समस्या से निपटने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मान्यवर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। साइबर सुरक्षा कानूनों को सख्त बनाया जाए ताकि गरीब और अशिक्षित नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। गरीब वर्ग के लिए डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया सरल बनाई जाए और साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता गांव और नगर स्तर तक पहुंचाई जाए। स्थानीय पुलिस को साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाए और इन मामलों में गरीबों की सहायता हेतु विशेष प्रावधान सुनिश्चित किए जाएं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गरीब नागरिकों की सुरक्षा हेतु डिजिटल सुरक्षा पर यथासंभव आवश्यक कदम उठाए जाएं। श्री राघव चड्डा, श्रीमती रेखा शर्मा जी। Thank you, Chairman Sir, for giving me opportunity to demand for putting my demand for gender safe, smart public transport for small and medium towns. I draw attention of government to a fundamental requirement for women's empowerment and economic participation, the need for safe, reliable, and modern public transport system in India's small and medium towns. While metropolitan cities have seen improvement in bus fleets, metro services, and surveillance systems, thousands of women in Tier 2 and Tier 3 towns still face daily challenges simply in commuting to school, colleges, workplaces, hospitals, or markets. I humbly demand the creation of gender-safe, smart transport network across such towns. These need not be heavy infrastructure projects, but they can be practical, affordable, and quick implementable. A key component of this initiative should be electric minibuses, fleets, which is ideal for narrow town roads, ensuring frequent, reliable, and low emission mobility from early morning to late evenings. Equally important are small safety features, including GPS tracking, linking to a public dashboard, CCTV surveillance inside buses and at major stops, panic buttons connected to centralized control rooms, and live tracking mobile apps for women passengers. Many women hesitate to use public transport after sunset because bus stops are poorly lit. Solar-powered LED lighting, CCTV-enabled shelters, and clean seating arrangements can make a significant difference. Transport planning must also consider women-focused routes and timings, covering girls' colleges, nursing institutes, industrial areas, and marketplaces with reliable evening return services. Additionally, employing women as conductors,
supervisors, and control room staff will enhance confidence and create dignified employment. Safe mobility strengthens women's access to education, employment, entrepreneurship, and social participation. I urge the government to look into it. Thank you, sir. Sri Samik Patacharya ji. Thank you, sir, for allowing me. Indian Railways has made a major progress in safety, passenger facilities, cleanliness, and modernization under the leadership of our Honorable Prime Minister. West Bengal has also benefited greatly through the new services and better infrastructure. However, the passengers traveling on local and express trains in Southeastern Division, headquartered at Garden Reach, Kolkata, are now facing frequent delays, cancellations, and disruptions. These problems occur due to infrastructure work, technical issues, and other operational reasons. The division handles important routes connecting Kolkata with major cities like Mumbai, Chennai, and carries many tourists, patients, and long-distance travelers. People from West Bengal, as well as neighboring state Bihar, Jharkhand, Odisha, depend on heavily of these trains. This repeated disruption causes serious inconvenience, especially to the patients traveling for urgent medical treatment. Although officials in the divisions are trying to manage the situation, more focused intervention is needed. Therefore, I request the Government of India to kindly look into the matter and take steps to improve train punctuality and operations in Southeastern Division at the earliest. Thank you, sir. Sri Dejvi Singh ji. धन्यवाद सभापति जी। सब्जेक्ट कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में हाल के महीनों में बढ़ते वायु प्रदूषण और जल प्रबंधन से जुड़ी गंभीर चुनौतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य के प्रमुख शहर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और मेरठ लगातार देश के अत्यधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल होते रहे हैं। खराब वायु गुणवत्ता न केवल लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, विद्यालयों, परिवहन और जनजीवन पर भी गहरा असर डाल रही है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता सीमित है, जबकि औद्योगिक अपशिष्ट का अनुचित निस्तारण और भूजल का अनियंत्रित दोहन स्थिति को और गंभीर बना रहा है। प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी कमियां भी सामने आई हैं, जिनके कारण सुधारों की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं सरकार से निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। प्रदूषण प्रभावित शहरों में स्वच्छता हवा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी और समयबद्ध क्लीन एयर एक्शन प्लान लागू किया जाए। नंबर 2, औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण और उत्सर्जन मानकों की कड़ी निगरानी के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए। नंबर 3, भूजल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाए। अंत में सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि नागरिकों को स्वच्छ हवा और सुरक्षित जल उपलब्ध हो सके। थैंक यू। श्री संजय सेठ जी। धन्यवाद सर। मेरा सब्जेक्ट है कंसर्न ओवर MSME एक्सपोर्टर्स अफेक्टेड बाय US टैरिफ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर 6.5 करोड़ से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं, जिन्होंने देश में 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है।
देश की जीडीपी में 30% से अधिक और एक्सपोर्ट में 45% से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाला यह सेक्टर आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा और पीएम ईजीपी जैसी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को जो सहायता दी जा रही है वह सराहनीय है, लेकिन वर्तमान में अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ के कारण हमारे एमएसएमई एक लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। टेक्सटाइल, लेदर और हैंडीक्राफ्ट जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स का माल गोदामों में फंसा है और कैश फ्लो पूरी तरह से रुक गया है। भुगतान में 90 दिनों से अधिक की देरी होने के कारण कई छोटी इकाइयों के खाते एनपीए घोषित होने के कगार पर है। संकट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बैंकिंग राहत की आवश्यकता है और इसलिए मेरा सरकार और आरबीआई से विनम्र आग्रह है कि इस संकट के समाधान हेतु एक यूनिफाइड रिलीफ मेजर लागू किया जाए, जिसके माध्यम से आरबीआई उन खातों के लिए वन टाइम फॉरबेरेंस विशेष छूट प्रदान करे जिसकी किस्तें टैरिफ के कारण रुकी हैं, ताकि वे एनपीए ना बने। साथ ही निर्यातकों को वर्किंग कैपिटल को सुचारू रखने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और रिपेमेंट मॉरेटोरियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यदि समय रहते एमएसएमई उद्यमियों को यह आर्थिक सहायता मिल गई तो हमारे 28 करोड़ रोजगार सुरक्षित रहेंगे और वो विकसित भारत के लक्ष्य में अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। श्री त्रिची शिवा, श्री संत बलबीर सिंह जी। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 3rd December 2025.